So its general equation of space you can write in this form also: x minus alpha whole square plus y minus plus beta square. y minus beta whole square plus z minus gamma whole square is equal to sum r square, where alpha, beta, gamma is the center and r is the radius. In this way you can write, or in general you can write ax square plus ay square plus az square. Keep in mind coefficients of x square, y square, z square will be same. Either you can write by dividing it or you can write in this form in general: plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. It is also general equation. You have studied in your coordinate geometry that the general equation of conic, in fact. Right? So there the wz Yes, sir. term was z term. If you put z term 0, then it will become the general equation of circle, because you have a is the same for x square, y square. Or after solving it, you can write it x plus, by arranging some terms, you can write in this first form: x plus u by a whole square plus Plus y y plus v by by a a whole square plus z plus w upon a whole square is equal to u square plus v square plus w square plus minus 80. Sorry, AD minus 8 minus 80 upon a square. Now in that case, you can compare it this equation number 1. If I am saying it is 1, suppose it is 2. So from comparing from 1, you can see your center will be minus u upon a minus v upon a minus w upon a, and radius will be under root of u square plus v square plus w square minus a d upon a. This will be radius. These things we have done in the last class, and I also shared the video Zoom recording. Then we have equation of the sphere on the join of 2 points. If it is given 2 points are joining on the diameter, you have diameter, suppose like this: x1, y1, z1, x2, y2, z2. They are the end points of any diameter of a sphere. You have a sphere. You know sphere you can plot in this. You want to plot a sphere. If I am taking as a center at the origin. If center at the origin, then you can plot in this way. In general, you can take center anywhere. So if it is the case when you have this, so its equation was, remember, yes, x minus x1, x minus x2 plus Plus y minus y1, y minus y2 plus z minus yes, z1, z minus z2 equals to 0. yes. It is the case when you know the diameter for the end points of the diameter. And then we have done one problem. Let us take another concept: equation of the tangent plane. If you want to find equation of a tangent plane, equation of a tangent plane. Tangent plane. Suppose you have a sphere. Keep in mind it is not circle, sphere. And I am having some plane which is just touching it somewhere here. So this plane is what? It is sitting on this. Keep in mind.
This plane is crossing at this point P. It is sitting on this, not. I can plot it like this, or you can plot in 3 dimensional. So this is a plane which is tangent. It will be like here, or you can plot. Suppose I am taking and a plane is like this at some point. This is a plane which is tangent at some point here. Okay. So it is not crossing. It is understood. It is not crossing, है ना? Yes, sir. ये यहाँ पर टच कर रहा है इसे बस. Keep it point. तो 3 dimension figure है. So it will look like this, but it is actually touching it at some point P. So this plane is just sitting on the sphere, I can say. This is a point P. This is a plane. This is a sphere. So that for the sake of convenience, I am taking that suppose it has center at 0, 0. Only just for the sake of convenience, I am taking that sphere be x square plus y square plus z square is equal to a square. This is the radius. And let x dash y dash z dash be any point of this. Here I am taking any point P whose coordinates are x dash y dash z dash. Let x dash y dash z dash be any point on. So this point will be on the sphere as well as on the tangent plane. I'm taking on it on one. So now you know if it is a point, if I am joining this origin by this P, so I can write the direction cosines. This is your 0, 0, 0. Okay. So I can find the direction cosines. Then the DCs, they are proportional to the x dash minus 0, Y dash minus 0. y dash minus 0. मैं इसके proportional dash हो गए, यानी ये minus dr हो 0. गई है. I can say they will be dr. That means you can say x dash, y dash and z dash. Yes, is OP के हो जाएंगे. The direction cosine of OP. Huh? And you know also this thing that this OP will be what? Because this is a tangent plane, this will be perpendicular to this plane. बताइए. Yes, sir. है ना, perpendicular, because this tangent plane is sitting on the sphere. So when you will draw a line from center to the tangent plane, this line will be normal to the plane because it is a perpendicular. So I can say here OP is the normal to the plane. है ना? OP is normal to the tangent plane. And what is the equation of a plane? Equation of plane you can find. है ना? How? So if you know this is OP and OP की distance I know, है ना? Also we know OP is how much? Under root. Why the distance formula? OP is this.
क्यों भाई? सर ए बी तो लिख सकते हैं सर इसे। यस सर। है? हाँ, यस एग्जैक्टली वही, मतलब एडजस्ट। अभी तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से बता रहा हूँ, विच इज योर ए स्क्वायर, यस ऑफ कोर्स इट इज योर ए, है ना? OP is by distance formula because OP is the radius, so which is a of course. So now if you know the DCs of the normal, then what was the formula of the plane? If you have a point which is passing through the plane and you know the DCs of the normal, क्या था formula? Lx plus My plus Nz is equal to P, है ना? If you know the Yes, sir. Yes, if sir. you know the distance P, I can write the equation of a normal in terms of DCs. Lx plus My plus Nz is equal to P, equation of the plane. So here I can write, so I know the direction cosine of the normal is this, proportional to this. So I can write x dash plus y dash plus z dash is equal to how much? X dash square plus y dash square plus z dash square. So it will be how much? X dash square, ये आ जाएगा, यस सर। and it is how much? Yes. It is ए a ए square. स्क्वायर। So this is the equation of a tangent plane. X dash plus y dash plus z dash is equal to a square. ठीक है? और अगर आपको याद हो कि अगर ये इक्वेशन होती थी तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट के टर्म को लिख देते थे x इंटू x1, वही तो किया यहाँ पे, देखिए y Yes, इंटू sir. वाई डैश z इंटू जेड डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना? So it is a equation of a tangent plane. If plane है तो it will be linear, quadratic नहीं होगी यहाँ पर, equation of plane is a linear. ये x dash y dash z dash क्या है, they will be some coordinate on the sphere and on the plane, common coordinates. So it is easy to सर ओपी एक ओपी को सर ए कैसे ओपी को ए OP रेडियस है ना, OP इज द रेडियस, यस सर OP रेडियस है स्फीयर की, तो ये डिस्टेंस यही नॉर्मल हो जाएगी आपकी यहाँ पर इस प्लेन के लिए। तो इक्वेशन जो थी हमारे पास उसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, ठीक है ना? जी सर सर जैसे सर हम थैंक यू हाँ। कोनिक सेक्शन में हैं? सर कोनिक सेक्शन में सर हम जैसे सर कोनिक सेक्शन में या फिर सर जी सर्कल में सर हम जी एक्स स्क्वायर और सर वाई स्क्वायर को सर ऐसे भी लिख देते ना सर एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे करके सर एक फॉर्मूला बनता था सर टेंजेंट जी जी निकालने के लिए। जी। सर उसमें भी सेम अप्लाई हो जाएगा ना सर वो? हाँ वही चीज तो करी, यहाँ भी तो वही कर रहा, देखिए यहाँ भी तो ये किया, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे, है ना? अभी मैं जनरल यस सर। जनरल फॉर्मूला भी लिखूंगा। हाँ, ये तो आपका इन पर्टिकुलर दिस है। नाउ वी हैव अ जनरल इक्वेशन, दैट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, दैट इज प्रॉब्लम, that is your exercise in general. So I was considering in particular if you have a sphere whose center is at the origin and radius it is, but if I am taking the general means this equation 2 is 2 लिखा था मैंने, so that is a problem, so that the equation of the tangent plane at a point some point is given to you, suppose x dash y dash z dash of the sphere. Now sphere I am taking in general, suppose x square plus y square plus z, or you can take a also, I am dividing by a, I am adding in general in this way, or I am taking a is equal to 1. So this will be also the general equation of a sphere because coefficient is 1. 2ux plus 2v y plus 2wz
plus g is equal to 0 is, so that is how much? X dash plus y dash plus z dash plus u. It will become how much? 2x will become x plus x dash, है ना? Plus v, 2y will become Y plus Y y dash. plus y dash plus z w, 2z will become z plus z dash plus d is equal to 0, है ना? ये हमें शो करना है. अगर आपको याद आ रहा हो कि सेम टाइप ऑफ वर्क यू हैव डन इन योर सर्किल केस आल्सो, है ना? We can write the product term can be written as x dash and the addition term 2 times x term can be written as x plus x dash. ये इसे इस तरीके से याद भी रख सकते हैं. ये हम शो करेंगे पहले यहाँ पे. So same thing I am taking your point P is on the sphere whose coordinates are x dash y dash. यही figure जैसे हमने लिया था. ये some point P on the sphere. Now I am not taking center at the origin. Now center is arbitrary some alpha beta gamma. So here center in fact alpha beta gamma, center will be in fact what? You can see here what is the center. Minus u minus b minus w, because a is 1 from this formula. This is the center. So a is 1, so center will be minus u minus b minus w and radius will be under root u square plus b square plus w square minus t. So here, so look at the solution. Now the point lies on the sphere. The point P, I am supposing it P, x dash, y dash, z dash lies on the sphere. Suppose this question I am saying equation number A lies on the sphere A. So it will satisfy. So we have इसे put कर दिया इसके अंदर x dash square plus y dash square plus z dash square plus 2x dash plus 2y dash z dash plus d is equal to 0. Suppose it is equation number I am saying B. That was A. That is. And we know now the center of A is also the center of A means sphere, is, what is the center? If I am denoting by some C, minus U minus V minus W, no? Because it is not origin, so I am taking C. O से denote नहीं करता. So the direction ratio, अगर I am taking DRs of the line joining C to P is, DRs क्या हो जाएंगे? देखिए जरा, अभी आपका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश माइनस, ये था ना प्रॉब्लम, माइनस 0. सो हाउ मच इट विल बी? Minus X u minus dash u. plus u X dash u plus u. yes, x dash plus u, y dash Y dash plus plus b, z dash plus w. And ये dash हो plus गया. w. ये हमें डीसी डायरेक्शन रेशियोज पर चल गया, या कह सकते हैं डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट नॉर्मल. व्हाट अबाउट नॉर्मल? जो भी हमने किया था, normal to the tangent plane at P has, so this is the direction ratios of the normal also, है ना? Because that CP is normal. You can write, so normal to the tangent plane at P has DRs x dash plus u, y dash plus b and z dash plus w. So hence equation, like equation of the tangent plane is how much?
x into x dash plus u है ना lx plus y into y dash plus v plus z into z dash plus w is equal to distance p. I am taking a small p. ये जो लेंथ थी इसे अगर हम p से डॉट कर दूं क्योंकि p अभी मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ पे. ये क्वेश्चन आपको पता ही है lx plus my plus nz is equal to p. Now suppose it is a question number I am saying c a b c. अब also tangent plane passes through this plane also passes through the point p है ना. ये plane है ये p तो सभी कॉमन है तो it will satisfy also है ना. So the tangent plane passes through this point p also because it's a common point to the square as well as to the tangent plane. So it will satisfy c है ना. So I can put x dash plus u plus y dash plus v plus z dash plus w is equal to p. Okay. And now from this c and d both are the value of p. So I can eliminate p, I can compare c and d. So c and d implies, because these are the values of p, so left hand side x of x dash plus u is equal to how much? This x dash plus u plus y dash plus v z dash plus. इसको बस अब आपको सॉल्व करना है. यू विल बी गेटिंग योर आंसर. p की वैल्यू हमने ये पुट कर दी या कंपेयर कर दिया. सो यू विल बी गेटिंग. सो देखिए फर्स्ट टर्म इज कमिंग x dash plus ux plus y dash plus vy plus z dash plus wz is equal to how much it is coming? X dash square plus ux dash plus y dash square plus vy dash. Okay. And here I can write it x dash square plus y dash square plus it is what? X dash square plus y dash square plus z dash square plus ux dash plus vy dash plus w A dash. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 होता था. So this is equal to, देखिए from equation B how much it will be? It is Zero. minus no जीरो नहीं. देखो यहाँ पर क्या चीज है, इसे ये लिख सकता हूँ मैं. Yes, sir. Yes, sir. है ना. फ्रॉम बी ये देखिए तो यू हैव एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू एक्स डैश यहाँ पे 2 था प्लस बी वाई डैश प्लस डब्ल्यू जेड डैश. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस यू एक्स डैश माइनस बी वाई डैश माइनस डब्ल्यू जेड डैश माइनस डी. ये तो होगा इसकी वैल्यू. देखिए बस इसको लेफ्ट पे आके ऐड कर दीजिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसे इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड. So you will be getting x dash plus ux minus it will become, so you can write x dash plus y dash plus z dash plus u times x plus x dash y dash term इधर ले आइए, it will become plus b times y dash plus w times plus d is equal to 0. So in this way you can find equation of a tangent plane. So it is a general equation.
One more problem is there. Problem number 2. Find a condition. Find the condition that the plane x plus my plus nz is equal to p. Find a condition that this plane should touch the sphere. This sphere is given in terms of general equation. Condition निकाल लिया हमने. Condition this plane will touch the sphere means what? The condition that this plane will be the tangent plane of the sphere. इसकी क्या condition है? Okay. प्रॉब्लम क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हमें कंडीशन एक कंडीशन निकालनी है कि अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी टचिंग द स्फीयर, नॉट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. तो हमने निकाल ली. मींस व्हाट इफ यू हैव सम स्फीयर and this is the tangent, some plane. Suppose this is a plane. As I told you कि this is plane is this is sitting on the sphere. So और आगे बढ़ा लो इस तरीके से. It is not circular, it is sphere. Keep in mind. It is your sphere. So what condition it is touching? Equation given है आपको इस plane की. Lx plus my plus nz is equal to ये given है. It is the center C है. So I am not taking origin because it is a general sphere given. So center is minus u minus v minus w, and it will be touching at some point. Suppose this point P. So here center you have already minus u minus v minus w, and you have radius. So radius you know u square plus v square plus w square minus d है ना, because a is 1 here. So now, and this radius will be what? This will be actually CP है ना, because this tangent plane is sitting on the sphere. क्यों भाई students? Yes, sir. Bhunesh, Yes, sir. CP will be what? This है ना, because it is the radius है ना, ये distance तो CP होगी. सर यहाँ पे जी, a सर. बराबर 1 Hmm? a बराबर 1. Hmm. And now I will use the length for also, and the length of the perpendicular. If I am finding length of the perpendicular from the center to the sphere, to the plane, sorry, from the center to the plane, Lx plus my plus nz is equal to p. याद है एक फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, length of the perpendicular from a point on the plane. Yes, sir. Yes, sir. Lx dash plus my dash plus nz dash minus p. Upon under. So if I am taking in terms of that
LMN here. So it will become how much? This I can write in general, it was plus minus L into minus U, है ना? Plus M into minus V, because X dash Y dash Z dash is now minus U minus U minus W. So in terms of plus minus, if I am writing in general, plus N minus W minus P upon under root L square plus M square plus N square. Okay, it was a formula. याद है जो ड्राइव करके लिखा था साइन के साथ, प्लस माइनस L माइनस U प्लस M माइनस V प्लस N माइनस W माइनस P अपॉन दिस. अब वो हम इसका मॉड ले लेंगे तो ये सब प्लस ही हो जाएगा, बिकॉज आई एम फाइंडिंग द डिस्टेंस. सो दिस आई कैन राइट, इफ आई विल टेक द मॉड, मॉड के टर्म में कितना हो जाएगा? यू कैन टेक मॉड, सर यस सर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना? वन वन उस केस में होती थी. वन कब होती थी बताओ भाई, कोई इनका आंसर दो, कौन देगा आंसर? सर डायरेक्शन कोसाइंस होती है जब, किस केस में होते थे तो वन? सर ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है? डायरेक्शन कोसाइंस आपके जब होते थे, इफ इट इज अ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, है ना? इफ इट इज अ डायरेक्शन कोसाइंस तो ऑफ सर अ ये भी लाइन तो व्हिच इज मेकिंग ये भी तो एंगल. नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है. नहीं, ये प्लेन के है. यहाँ पर आई एम फाइंडिंग सर कंडीशन दैट द प्लेन. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है ना? हाँ हाँ. तो सर नॉर्मल भी तो here I एक want to लाइन ही होगी. here I want to find the formula in terms of डायरेक्शन कोसाइंस. यहाँ पर ये कोएफिशिएंट्स है प्लेन के. यहाँ पर इफ आई एम टेकिंग दिस, तो इस फॉर्मूले में जो हमने ड्राइव किया था ना, प्लेन आपके पास ए एक्स बी वाई वाला जो था, तो इन दैट केस इट वाज एक्चुअली हियर आई एम राइटिंग एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड. लेकिन ये जो एल आपका आ रहा था, दिस एल वाल प्रोपोर्शनल टू दैट ए अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट. क्या फॉर्मूला था वो? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सी बी स्क्वायर स्क्वायर, प्लस सी है ना? स्क्वायर. हाँ, Yes, sir. ये था. तो हियर आई एम राइटिंग इन दैट टर्म. ठीक है, हियर आई एम राइटिंग इन दैट टर्म. यहाँ पर मैं इसे वन ले ओके सर. लूंगा. हाँ, here I am writing in that term, a upon a square plus b square plus c square. Here L is this thing. Okay, so that's why I am dividing by this. ये फॉर्मूला तो हमने ड्राइव किया था ना लास्ट इसमें, मुझे याद आ रहा है. So it was coming this, है ना? So when you will take mod, it will become how much? I can write mod of e plus minus sign. If you will remove, it will become minus u plus m into minus v plus n into minus w minus p upon under root, because it is always positive, so denominator you can write L square plus M square plus N square. A minus sign b you can take outside and you can write in positive terms, so it will become Lu plus Mv plus Nw plus P upon L square plus M square plus N square with square. ओके, तो ये फॉर्मूला आपके पास आर्क लेंथ का था. डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप ये, the arc length from the perpendicular to this. So we just put the coordinates, है ना, Lu plus Mv plus Nw plus P upon root L square plus M square plus N square. अब ये जो लेंथ है आपकी, ये लेंथ और ये जो रेडियस है, क्या ये सेम है? बताइए. This is the Yes, length sir. of the Yes, sir. perpendicular, this, है ना, and this is the radius, but both are equal, है ना? Yes, Because yes, C, equal. हाँ, इक्वल इक्वेट करा दिए, बस यही कंडीशन दे दी आपको. It will give you the condition. So you can write, if the plane
टच द स्फीयर, अगर प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है तब क्या होगा? देन रेडियस ऑफ द स्फीयर will equal to the length of the perpendicular, है ना? तभी तो होगा अगर टच कर रहा है।